Good morning, good afternoon, good evening everyone, on which time you are going to watch this video. So all time are good. Here I am just welcome you again the rest topic which are left in the last video. Here I am going to restart the video with the topic that I told you in the last video. Like I have left the shortcut keys as well as I just told you the small segment of the hardware and software. In the last video I have told you the hardware and software, but I will discuss about the devices which is used in the hardware today and something related to your software like application software and system software. So firstly I am going to tell you about the shortcut keys which is very commonly used in your computer system, or can say everyone who has laptop or desktop is related to these shortcut keys. It will be used in Word, Excel, PowerPoint as well as in your computer system. Like if you are using the notepad, you can use these shortcut keys. You are going to use Excel, Word, PowerPoint. Other than you will use the browser or some documents, then you will also use these shortcut keys. So here I am going to tell you every shortcut keys detail. So start with the first one, Control A. Control A means select all. Select all. It means if you want to select all the document randomly once, then you will press the key Control A. It will select all the document format. So next one is Control B. It is bold. Bold means if you want to make your text thick, like this is B and this is Control B. Okay, your B is thick or can say bold, so you will use the Control B shortcut key. Firstly you have to select one more thing. When you are going to use the shortcut key, firstly you have to select all the text which is shown in your desktop. Beside that you cannot able to use the shortcut key. Okay, so you have to first select the document or select the text. Third one is Control C. It is copy. There are three shortcut keys which is correlate, which is the first one copy, second one cut, C-U-T, cut, and the third one is paste. Okay, these three shortcut keys, copy, cut and paste, are correlated. The meaning I will going to tell you. If you want a duplicate copy of your document, it means duplicate. Okay, then we'll use firstly copy and second paste. Like if your document is available in the D drive and you want this document copy on the desktop, then firstly you have to copy that document in the D drive. After that you have to paste on the desktop. So this is the copy and paste. But if you want to move a document from one location to another location, then you will use the cut and paste. Firstly you have to cut. This is used for moving a document. Okay, moving a document from one location to another location. In both cases, copy and cut, after copy and after cut you have to click or you have to use this shortcut key, paste. Without this you cannot able to make another document or new location document. Okay, next one is Control D for font dialog box. Okay, font dialog box, you know very well, where the font color, font style, font size you can easily change. Okay, next one is Control E. This is alignment. Okay, alignment and center. Basically alignment are, there are four types of alignment. First one is left, second one right, third one center and fourth one justify. These four alignments are available in the Word, Excel and PowerPoint. So you will use first alignment center, where your document or your text will be available in the middle of the document. ठीक है, स्टार्टिंग विद मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल मिड से आएगा. जैसे अगर मैं इस पूरे बोर्ड की बात करूं, दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज योर राइट अलाइनमेंट and this one is center alignment. And if we are talking about the justify, it is used in the paragraph.
when you write a paragraph, there are so many unspecified spaces or semicolons or column or dots are available. So remove these semicolons, colons and dots from the paragraph. You will firstly select the paragraph and use the shortcut key for justify. Then your paragraph will be in the standard manner. This is called the justify. So we will talk about later. Firstly, we have to know what is alignment. So alignment is the setup of the page from left side, right side and center. Okay. Next one is Control F. It is used for find. Okay. To find a word, to find a letter, to find a number, you will use the Control F. When you press the Control F, a dialog box will be appear. You will write the word to find your word. Next one is Go To. It is used to jump a page or a line number. Okay, directly if you want to jump on the 117th page or can say 1455th line, then you will use the term Go To. Okay. H, it is used for replace. Just like that, if you are using the thesis or can say using the assignment of a person whose name rapidly comes in the assignment and you don't know where the name is available in the assignment, so you will use this shortcut key to replace his name from yours. Okay, so replace shortcut key is used for replacing a word from the new one. Next one is Control I. It is italic. Okay, italic means cursive writing. In English grammar or English language, when the writing option is available, first one is normal A and second one is A. This is cursive writing. So use the cursive writing, we will use the shortcut key Control I. Next one is Control J. It is justify, which we are talking about in the last point. Justify, which we are talking about the alignment point. Okay. Here. Next one I am going to tell you, Control K. It is used for hyperlink. Okay, to make a word in hyperlink, you will use the shortcut key Control K. Okay. Next one is Control A, alignment. Again, but this time left. Next one is Control M, used for indent from the left side. Indent and spacing is the option which is available in the font option. Okay, in MS Word. Next one is Control N for new file. New file. If you want to use new file in the MS Word, Excel and PowerPoint, you will use the shortcut command Control plus N. Control O, open the existing file. Existing file. Like if a file is already situated in your computer system and you want to open the MS Word or Excel or PowerPoint, you will use the shortcut key Control plus O. Okay. Next one is Control plus P. It is for print. Print. To print a document, you will use the shortcut key Control plus P. A shortcut key is available Control plus F2 for preview. Okay. Before printing, if you want to show your page how the printout will be appear in the page, then you will check your printout before printing. It is called the preview. So this is the shortcut key to check your preview. Control plus F2. Next one is Control plus Q for delete the formatting. Formatting.
Delete the formatting means there is a paragraph in your MS Word and you apply so much formatting in your paragraph, but at last you want all the formatting will be removed, should be removed. So you will apply the Ctrl+Q after selecting all the paragraph. All formatting will be removed automatically. Okay. Next one is Ctrl+R means alignment again, but this time is I know right. Okay. Next one is Ctrl+S. Everyone knows save, to save a file. Save as, there is a shortcut key F12 to save as. There is a little difference between save and save as. First time you are write something in your document, you want to save your file, Ctrl+S, but next time if you want to edit your file and don't want to remove your last file and new file will be also saved in the new location, then you will use the save as button. Okay. मतलब इतना सा है कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, आपने फाइल को सेव किया तो Ctrl+S नॉर्मली आप सेव कर सकते हैं, बट उसके बाद आपने उस फाइल को एडिट किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, आप ये भी नहीं चाहते कि लास्ट वाली फाइल रिमूव हो और आपकी नई फाइल भी सेव हो जाए, देन यू विल यूज द ऑप्शन सेव एज. ये रीनेम करने के लिए नहीं होता सेव एज. ओके. Ctrl+T, इट इज यूज्ड फॉर टैब न्यू. ओके. न्यू टैब के लिए इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड फॉर न्यू टैब इन द ब्राउजर्स. Actually it is used only in the browsers. Basically somewhere it is used for creating the table, but in some versions of the MS Office the shortcut key of Ctrl+T is not used or cannot be work. Okay, here Ctrl+U, underline. Underline, you know very well, this is your underline. Okay, select the text and press Ctrl+U. Ctrl+V, you know very well. Ctrl+W to close the document. Close document. Ctrl+Y, redo, repeat the last action, and Ctrl+Z, undo, cancel the last action. Okay, your last action you have applied on the document or spreadsheet or PowerPoint. If you want to cancel the last action, you will apply Ctrl+Z, but if you want to come the last action again, you will apply the redo. So there is a little difference between redo and undo. Okay, I think these shortcut keys will help you much in your computer system when will you will use MS Excel, Word or PowerPoint. So these are the basic shortcut keys. Okay, so here I am going to tell you, I think there is no problem. If there is a problem in any shortcut keys, then you will tell me. Okay, I will show you some other shortcut keys in some other classes which is related only to Windows. Okay, only for Windows. So here I am going to tell you the new point which is already discussed in the last video, but here I am going to tell you about the devices. Okay, so firstly here I am going to tell you about the hardware. In the last lecture I have told you the hardware is the equipment which is tangible, which is touchable in the computer system. Okay, so all the parts which is touchable, tangible in the computer system is called hardware. I have told you the 4 types of the hardware. First one, second one, third one and fourth one. First one is input devices. Second one is output devices. Third one is processor. And fourth one is storage devices. Okay. So firstly we will discuss about the input devices. All the devices which used to give the command to the computer system is called the input devices. Now I will tell you how many input devices you will use. First one, keyboard. Second one, mouse. Third one, scanner. Fourth one, mic. Next one, MICR.
next one VCR, next one OCR, next one OMR, next one touchpad, okay, next one touch screen, next one digitizer, okay. There are so many devices. If we are talking about the input, there are so many devices, but we will discuss about it. Firstly, we will discuss about the keyboard. Keyboard is the primary input devices of the computer. Okay, if we are talking about the keyboard and mouse, these are the primary input devices. Primary input devices means without these devices, you are not able basically to give the input to your computer system. If I don't give you the keyboard and mouse, how it is possible to give the command to your computer system? Like if you want to listen the songs or watch the movie, how will give you command to the computer system? There is not a single possibility if you don't have the keyboard and mouse. So these are the primary input devices. Let's discuss about the firstly keyboard. So keyboard has some keys. These keys all called some alphabetical keys, some numeric keys, some special keys, okay, some function keys, some toggle keys, okay. Alphanumeric you know very well. Special character means like this, okay. Function keys F1 to F12, these are the function keys. Toggle keys Control, Alt, sorry, toggle keys means caps lock and num lock. These are the toggle keys. Modifier keys, these keys are Alt, Control and Shift. Okay? These are the keys available in your keyboard. Basically in a standard keyboard, number of total keys are 104. So this is the description of the keyboard. Basically, if we are talking about the standard keyboard keys, so 104, alphabetical keys you know A to Z, numeric keys 0 to 9, special keys @ epsilon, these parts, colon, semicolon, these are the special keys. Function keys F1 to F12, toggle keys caps lock and num lock, modifier key Alt, Shift and Control. After that, there is a single modifier key is also available nowadays in keyboard. This is FN. It is also a modifier key. It's not a function key, it's a modifier key according to the keyboard, because if we are talking about the modifier keys, these keys are available with the help of second keys. It means if you are going to use the Alt, then you have to use some other keys also. If you want to use Control, you will also use the second one keys. These modifier keys can never be used alone. Okay, so this is the description of the keyboard. Secondly, I am going to tell you about the mouse. If we are talking about the mouse, it is a pointing device. Okay, it is a pointing device. Why? Because it has some arrow, and this arrow is called pointer. Okay, not cursor. It's not a cursor, it's pointer, just because it is called the pointing device. You know, it has two buttons, left and right, and one scroll bar, one scroll wheel. Okay, then you will use your mouse to make your page up and down, use some functions with the help of right click and left click. Always use the left click for selecting a function. Okay, so this is the description of mouse. There are so many types of mouse, some optical mouse, some wired mouse, wireless mouse. Okay,
Next point is scanner, a device which is used to convert your hard copy into the soft copy. Understand? If you have your photograph and sign, and your photograph and sign is not available in your computer system, the device which is used to send your photographs and signs hard copy into your computer system, and all the data which is available in your computer system is called the soft copy. ओके तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है. हार्ड कॉपी मतलब आपके पेपर वर्क को कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है, कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस में भेज देती है. माइक की बात करें तो ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट कमांड. ओके, ऑडियो फॉर्मेट कमांड always given by the mic. Example, if you give the password to your computer system, your voice. एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा. एक मूवी आई थी शिवाजी द बॉस, यू नो वेरी वेल. रजनीकांत ने एक ही पासवर्ड दिया था, क्या? शिवाजी द बॉस कूल. सिर्फ उस कूल की वजह से, सिर्फ उस वॉइस रिकग्निशन की ना होने की वजह से ही वो पूरा का पूरा लैपटॉप क्रैश हो जाता है. तो ये जो माइक होता है ये ऑडियो कमांड सिस्टम तक पहुँचाता है. ठीक है, तो ये जो माइक होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो फॉर्मेट कमांड को यूज करने के लिए. नेक्स्ट बस MICR. MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. Next one BCR, bar code reader. Next one OCR, optical character recognition. Next one OMR, optical mark reader. Okay, so these devices has the full form MICR, BCR, OCR and OMR. These two devices, MICR and OCR, is used in the banks for checks and drafts. There are some digits which is available on the checks and draft, then MICR and OCR is used there. Okay, some of the application software which is available in your computer's mobile phone, which also use the OCR function, like your cam scanner. Cam scanner use the OCR function, or optical character recognition, which convert your image copy into the PDF format. Okay, if we are talking about the BCR, barcode reader, some bars are available in your product. These products can be your iCard, these product can be your any type of information which is available in the form of bars. So to read these bars, barcode readers are available. Okay, so that's why it is the input devices. Optical mark reader, in the offline competitive exams, OMR sheet are available where the oblink function is, जैसे these are the option A, B, C, D and these are the ovals. Okay, these are the ovals. This is the first question, second question, third question. This is the filling. Okay, to read out these OMR sheet, the optical mark reader is used. Okay, so read the competitive exam, offline exams sheet, read OMR reader is used. Next one is touchpad. Touchpad are available in your laptops. माउस, जो लैपटॉप माउस का एरिया होता है, द एरिया वेयर द वर्किंग विद योर फिंगर, यू आर वर्किंग विद योर फिंगर, इज कॉल्ड द टचपैड. Okay, these touchpad are available in your computer system, not in your laptops, and these touchpad are also available in the ThighPads. Okay, ThinkPad.
Okay, next one is touch screen. Everyone know what the touch screen is. Nowadays you are using the smartphone, and a smartphone also has the touch screen, and touch screen is the input device, just because if you click on the screen, the mobile phone accept your finger, or you can say your command. Okay, so that's why it is also a input device. Digitizer is a area which is available in your mobile phone, inside the mobile phone, so it is also a input device. Okay, so these are the input devices basically used by the user like you. I think there is not a single confusion. If there is a confusion, you will ask me, you can comment me on the video. Okay, next one is output devices. If we are talking about the output devices, these input devices give the command to the computer system, but if we are talking about the output devices, this is give you the result, this gives you the results, like monitor, printer, plotter, speaker, and projector. Starting from the last point, if we are talking about the projector, large or big view. When we require the large or big view for the large amount of the audience, then we will use the projector. Okay, in the classroom, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ कोई चीज़ अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप की हेल्प से बतानी है, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे उसे नहीं दिखाता हूँ. आई कैन नॉट एबल टू सी ऑल द स्टूडेंट इन द लैपटॉप स्क्रीन. फॉर दैट आई विल यूज़ द प्रोजेक्टर, ताकि हर एक बच्चा चाहे वो लास्ट सीट पे भी हो, दे कैन सी ऑल द थिंग्स क्लियरली. ओके, तो फॉर द लार्ज व्यू यू कैन यूज़ द प्रोजेक्टर. Next one is speaker. It is used for the audio format output. Audio format output. Like if you want to listen the songs, you will use the speaker. If you want to announce something among the students, you will use the speaker. If you want to announce something else on the railway station, you will also use the speaker. So speaker is the thing which is available everywhere. Like if you are going to the temple, you are going to the everywhere, you will listen the bhajans. So speaker is used there. You will going to the mosque, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे भी अजान होती है, तो वहाँ पे भी स्पीकर का यूज़ होता है. तो there are so many things. Okay, you will go to some other places, like you are going to station, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट होता है, तो भी स्पीकर का यूज़ होता है. तो दिस इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव द आउटपुट इन द ऑडियो फॉर्मेट. ये वीडियो फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है और ये ऑडियो फॉर्मेट में. प्लॉटर की बात करें तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रिंटर. बिगेस्ट प्रिंटर. ऐसे प्रिंटर, दीज आर द प्रिंटर्स विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द large amount of data in a single paper, like your hoardings, your banners, your calendars. Basically calendar cannot be print on the normal printer, that's why we will use the plotter. Banners or hoarding cannot be print on the printer, that's why it is used the plotter. Okay, so this is the biggest printer. Next we are talking about the printer. So printer is the device which convert the soft copy into the hard copy. Hard copy. आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी सॉफ्ट कॉपी में डेटा पड़ा होता है, आपको जब भी पेपर फॉर्मेट में हार्ड कॉपी में चाहिए होता है, तो हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. बेसिकली अगर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं. some inkjet printer, some impact printer and non-impact printer. Nowadays हम लोग अपनी बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड. इसी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही हैं आपके लेज़र प्रिंटर. ठीक है, यही है आज के टाइम में आप इसी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र प्रिंटर का.
तो there are so many examples but you are using nowadays laser printer, ठीक है. some clouds printer भी होते हैं, बहुत सारे printers अलग अलग हैं. Okay, last one, if we are talking about the monitor, the visual of every data, the visual of every data we can saw on the monitor, ठीक है. it is a television, you can say television or can say the visual of data. आपका जितना भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है उसका विजुअल देखने के लिए यू विल यूज द मॉनिटर. वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनिटर्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर like CRT, LCD, LED. Okay, so these are the types of monitors, so many types. So these are the output devices, you have to learn these, you have to know about this. Okay, next, processor. Last time I have told you the processor means basically who convert your input into the output. Okay, so the device which is used to convert your input into the output is called the processor. So there is two devices. There are two devices. First one is CPU and second one is motherboard. Like a human being, computer system also a brain and also a heart. भाई बिना दिमाग और दिल के आप भी काम नहीं कर सकते. विदाउट ब्रेन और विदाउट हार्ट कंप्यूटर सिस्टम भी काम नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है. ओके, दैट्स वाई इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, तो ब्रेन हैज़ 3 सिंपल पार्ट. फर्स्ट वन ALU, CU and MU. ALU means arithmetic logic unit, CU control unit and MU memory unit. If we are talking about the motherboard इसलिए हार्ट है because डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय मदरबोर्ड. जस्ट लाइक अ हार्ट आपके पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, कंप्यूटर सिस्टम में अगर डेटा की सप्लाई की बात की जाए तो आपका वो कौन करता है? मदरबोर्ड करता है. इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द सिस्टम कहा जाता है और इसे ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहा जाता है. आई थिंक देयर इज नो कन्फ्यूजन इन मदरबोर्ड एंड CPU. एंड वन मोर थिंग, कैबिनेट अलग होता है, ठीक है, एंड CPU अलग होता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द CPU, एक स्क्वायर चिप होती है छोटी सी जिसे CPU कहा जाता है. एंड जो बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे आप सब लोग CPU कहते हो, वो CPU नहीं होता, उसे हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, ये एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है, ग्रीन प्लेट होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स पुट किए जाते हैं. एंड एवरी डिवाइस हैज़ इट्स मदरबोर्ड. चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके घर में फ्रिज हो, सबके पास अपना मदरबोर्ड होता है. यानी सबके पास, हर एक मशीन के पास अपना दिल है, ठीक है. सिर्फ आप ही के पास नहीं है, मशीन के पास भी दिल होता है. सो दीज आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस. एंड लास्ट वन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, तो स्टोरेज इज द डिवाइस वेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस आई वॉन्ट टू स्टोर माई डेटा. मीन्स मैं अपनी इंफॉर्मेशन या अपने डेटा को एट लास्ट कहीं पे स्टोर करना चाहूँगा तो वो एरिया मेमोरी का नहीं, वो स्टोरेज का होगा. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टोरेज. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिस्क. सेकेंड वन इज ऑप्टिकल डिस्क. थर्ड वन इज फ्लैश ड्राइव्स. And fourth one is magnetic disk, optical disk, flash drive and tape drives. Okay, तो आप लोग जो पढ़ते हैं ना हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, वो इसमें होती है. HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम लोग बात करें, CD कॉम्पैक्ट डिस्क,
DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, HBD BRD ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो दीज आर द डिस्क विच इज कॉल्ड द ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इस डिस्क में और इस डिस्क में सिर्फ स्पेलिंग का ही फर्क नहीं है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्क एंड दिस डिस्क, ओके। फ्लैश ड्राइव की हम लोग बात करें तो USB पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड लास्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेप ड्राइव्स, तो ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में आप सभी जानते हैं। इन द कंप्यूटर सिस्टम विच इज द स्टोरेज एरिया इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पहले इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती हैं क्योंकि ये स्मॉलर स्टोरेज एरिया होता है, बहुत छोटा ही स्टोरेज होता है। बेसिकली सिर्फ इतना 1.44 MB से स्टार्टिंग होती है। तो 1.44 MB में तो आपका एक छोटा सा गाना सेव नहीं होगा, बाकी डेटा की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद ही आपके ये क्या आए थे, पेन ड्राइव्स आई थी, फ्लैश ड्राइव्स आई थी। CD की हम लोग बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क की बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो स्पेस होती है वो 700 MB होती है। DVD की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 GB होती है। और BRD की अगर हम बात करें तो 5200 GB ये इसका स्पेस एरिया होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इट इज़ द बेंचमार्क और कैसे स्टैंडर्ड स्टोरेज, ये स्टार्टिंग है। इन सब की अगर हम लोग बात करें तो इनका कुछ भी स्टोरेज एरिया डिसाइडेड नहीं है, जितने मर्जी चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर बात की जाए तो पहली जो हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई गई थी वो 256 KB की बनाई गई थी। कितना ज़्यादा स्टोरेज है, इतने ज़्यादा स्टोरेज में तो मैं पूरा सुपर कंप्यूटर सेव कर सकता हूँ, ओके। दैट्स वाई। लास्ट ऑडियो एंड वीडियो टेप की हम लोग बात करें, अब इन स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो डिवाइसेस थी आज से अप्रॉक्स 15 ईयर्स एगो, लाइक अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो पहले कैसेट्स आते हैं कुछ इस तरीके के, याद है, कुछ इस तरीके के कैसेट्स आते थे जिसमें आप लोग सॉन्ग सुनते थे। तो दीज आर द टेप्स जिन्हें कहा जाता था मैग्नेटिक टेप, और उसी पे आपका डेटा सेव होता था। अगर आज के टाइम में आप लोग जो फोटोग्राफ खींचते हो वो डिजिटल फोटोग्राफ हैं, लेकिन पहले जो फोटोग्राफ खींचते थे उसमें भी एक रील का इस्तेमाल होता था जिसमें कुछ इस तरीके के खाने बटे हुए होते थे। तो दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक टेप वेयर द डेटा इज सेव्ड बाय यू बाय क्लिकिंग द फोटोग्राफ, बाय फिलिंग द ऑडियो और कौन से सॉन्ग्स, बाय आपके जो पापा मम्मी की शादी की वीडियो होगी ना, पुराने ज़माने की अगर वीडियो बनी होगी तो उसमें भी एक वीडियो कैसेट होगी कुछ इस तरीके की, तो उसमें भी अगर आप ओपन करके देखेंगे ना तो एक ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का एक टेप लगा हुआ होगा, तो दिस इज़ द टेप ड्राइव, ओके। तो दिस इज़ योर हार्डवेयर सेक्शन ओनली, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको शॉर्टकट की बताई एंड दिस इज़ द स्मॉल सेक्शन ऑफ हार्डवेयर। सो आई थिंक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट इन द सेशन, एनी डाउट इन द हार्डवेयर और शॉर्टकट की, you can comment me, you can text me on the WhatsApp or you can call me, okay. Thank you so much for watching this video and I will assure you कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो कि बेसिक्स के हैं I will distribute to you. I will make the videos for shortcut keys and for port जो कि नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, okay. So thank you so much for watching the video again. Thank you so much.